In this video session, we will be studying about pMOS characteristics. हमने बहुत सारे सेशंस में nMOS की characteristics के बारे में स्टडी किया है. Now we will relate pMOS characteristics with the nMOS characteristics. How we will see how they differ and what are the differences we have to tackle when we are dealing with pMOS. Here, if we want to see the geometry of our pMOS, that is very similar to nMOS, but obviously that is a bit complementary. हमने सिर्फ क्या करना होता है कि चैनल change all n type regions to p type regions. हमारे पास जो भी n type region है उनको आप p type में आप switch कर देते हैं. We have modified n plus regions with the p plus regions. Similarly, we have to change all p type regions to n type regions. That doesn't mean we have to change this p substrate, but what we do is कि हम एक anvil create करते हैं यहाँ पे within p substrate region. So this is our geometry of our pMOS. इसमें आप देख सकते हैं कि सिर्फ हमने इस n plus region को p plus से replace किया है और यहाँ पे हमने एक anvil create किया है. Rest of our design is same. हमने उसमें कोई चीज change नहीं की. हम अगर इसकी different जो हमारे पास layers हैं उसको देखना चाहें तो obviously all these layers are familiar. We have p substrate here, then we create an anvil, then we have a source or drain regions which are p plus doped, and then we have a gate oxide here which is basically providing an insulation between gate and this anvil region or this diffusion area. Or similarly, we have a gate area which is obviously designed with polysilicon material. And if we have to observe the capacitance of this pMOS device, we would observe this has a thickness of T oxide which is similar to the nMOS. जो कि हमने nMOS यूज किया था उससे ये बिल्कुल सिमिलर है. सो we can say कि हमारे पास जो कैपेसिटेंस है ऑक्साइड कैपेसिटेंस ऑफ pMOS is equal to the oxide capacitance of nMOS. And similarly we have same lengths for nMOS, same lengths as nMOS. If you observe a top view here of our pMOS, then you would say we have a width that is equal to W, and then we have a length that is equal to L. And similarly, this W, basically the width is our length or the width of this channel, and L represents the basically length of our channel. So we have same quantities like length and width are similar as compared to our nMOS. If we have to observe our electrical properties, we would say that for pMOS we reverse all voltage polarities and current directions. Here you can see that we apply positive voltage on source terminal, we have a negative voltage at drain terminal, and and obviously at gate terminal. Negative voltage doesn't mean we are applying obviously a negative voltage, but a lower voltage here. And also observe here कि हम basically ये जो source terminal है, जब भी हम लोग एक pull up network बनाते हैं तो हम अपने source terminal को positive voltage पे connect करते हैं. That is a VDD. Normally that use a VDD source. So हम यहाँ पे VDD से connect करते हैं तो our current travels in this direction, that is from source to drain terminal. तो हमारा current जो है वो इस direction में travel करता है. And we have different voltage symbols. We have been using VGS and obviously we are also using VDS as well. So अभी जो हम symbols use करते हैं वो VSG हैं instead of VGS, because we have gate is as a lower potential than source, so that we cannot have a negative voltage here. So अभी हम जो यूज करेंगे सिंबल वो हमारे पास होगा VSG, and this P represents pMOS. And obviously for nMOS we have been mentioning this N here. और उसके अलावा हमारे पास जो VDS वोल्टेज होती थी ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज है, उसको हम लोग अभी जो मेंशन कर रहे हैं वो बेसिकली S और D है, VSD है.
That means drain is at a lower potential than source. Like here we have a drain terminal. ये drain terminal का जो potential है basically वो lower है as compared to source. So we are using VSDP. And VTP, that is a threshold voltage of a pMOS, is a negative quantity, while like we have been using a VTN as a positive quantity. So obviously that is a basic question. You can revise the PN junctions where you can observe like why we have a negative potential, negative threshold, obviously negative threshold voltage while we are dealing with this pMOS. And then we have these charge carriers here, like charges here. These charges basically form a channel here. This channel obviously results in a current flow. तो हमारे पास जब भी यहाँ पे एक इक्वेशन हमारे पास सेटिस्फाई होगी या हमारे पास एक कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो हमारे पास यहाँ पे एक चैनल क्रिएट हो जाएगा और जिस चैनल की वजह से करंट जो है हमारा इस डायरेक्शन में फ्लो करना शुरू कर देगा फ्रॉम सोर्स टू आवर ड्रेन. So we can see that when these charges are zero, like that can only happen at VSG of P that is less than VTP. Like whenever this VS and G voltage, obviously this voltage difference is less than VTP or threshold voltage, there will be no charge present here. But जब भी हम ये voltage like increase करेंगे from this threshold voltage तो हमारे पास जो चैनल है ये चार्ज है बेसिकली वो एग्जिस्ट करेगा और जिसकी वजह से हमारा करंट जो है वो pMOS में फ्लो करता है. Similarly, we can say that when we have VSGP that is less than VTP, no channel is formed and pMOS is in cutoff region. Like whenever हमने यहाँ पे जो गेट सोर्स वोल्टेज है ये वाली गेट और सोर्स वोल्टेज है ये अपने थ्रेशोल्ड से कम रखी हुई है इररिस्पेक्टिव का हमने यहाँ पे क्या वोल्टेज अप्लाई की हुई है लाइक सोर्स टू ड्रेन टर्मिनल पे. तो व्हाट विल हैपन इज कि हमारे पास देयर इज नो चैनल हियर, हमारे पास यहाँ पे कोई चैनल क्रिएट नहीं होगा और चैनल क्रिएट ना होने की वजह से हमारा कोई करंट फ्रॉम सोर्स टू ड्रेन फ्लो नहीं करेगा. वाइल अगर हम ये वोल्टेज जो है इसको रिवर्स कर दें, सॉरी इस वोल्टेज को हम इंक्रीज कर दें फ्रॉम VTP एंड वी अप्लाई VDS एंड समथिंग ग्रेटर देन 0 वोल्टेज, तो फिर हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास अभी कंडीशन ये है कि हमने इस वोल्टेज को कोई पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई किया है दैट इज ग्रेटर देन 0 और इसको हमने जो VSG है बेसिकली इस दो टर्मिनल्स के बीच में जो वोल्टेज है उसको हमने इंक्रीज कर दिया है टू लाइक बियॉन्ड आवर थ्रेशोल्ड वोल्टेज. तो क्या होगा हमारे पास एक चैनल जो है वो बेसिकली यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा, दिस चैनल है. अब ये चैनल सेम चैनल है जो कि हमने NMOS के लिए स्टडी किया था जो कि बेसिकली वेरी कर रहा है ओवर दिस लेंथ, लाइक दिस लेंथ फ्रॉम वन pMOS टू another pMOS and the current will start flowing from source to drain terminal and we can observe here that the channel is thinner here near the drain region. और ये चैनल यहाँ पे थिनर क्यों है, that obviously has the same phenomena which we have studied for the NMOS. I would recommend कि आप वो जो IV characteristics हमने स्टडी किए थे जहाँ पे हमने एक वेरिंग चैनल स्टडी किया था फॉर NMOS, उस वीडियो को एक दफा आप दोबारा से सुन लें, उसको दोबारा से आप अंडरस्टैंड कर लें. that will clear all questions here. And obviously we have also said that channel vanishes near the drain when VSDP is equal to V saturation. Whenever we have a saturation voltage VSDP like VSD like this voltage जो कि हमने इस सोर्स और ड्रेन टर्मिनल के बीच में अप्लाई की है, ये वोल्टेज अगर सैचुरेशन के अराउंड होगी तो हमारे पास जो चैनल है नियर ड्रेन टर्मिनल वो वैनिश होगा, लाइक वो बेसिकली पिंच ऑफ हो जाएगा. सो अगर हमने सैचुरेशन रीजन की करंट फाइंड करने के लिए इक्वेशन देखनी है फॉर pMOS दैट विल बी IDP इज इक्वल टू बीटा P डिवाइडेड बाय 2 VSGP माइनस VTP obviously whole square. ये इक्वेशन बिल्कुल सिमिलर है as compared to our NMOS equation. We have only difference here, like we are taking a magnitude value of VTP and then we are basically using VSGP here and we have a beta P. So for this saturation region
हमने अगर करंट फाइंड करनी हो फॉर लाइक वी हैव टू फाइंड अ करंट, देन वी कैन से दैट और लाइक इक्वेशन इज गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन। और यहाँ पे जो बीटा पी है बेसिकली उसको फाइंड करने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है दैट इज KP/W/L। ये हमारे पास रेशो है चैनल की विड्थ और लेंथ की, और इसको आप यूज कर सकते हैं फॉर सॉल्विंग लाइक दिस IDP इक्वेशन। एंड इफ वी हैव टू फाइंड दिस KP दैट इज इक्वल टू म्यू पी एंड सी ऑक्साइड। ये म्यू पी जो है हमारे पास ये बेसिकली मोबिलिटी ऑफ होल्स है, और सी ऑक्साइड इज कैपेसिटेंस ऑफ लाइक ऑक्साइड लेयर। एंड सिमिलरली आप इसको यहाँ पे प्लग इन करके और दोबारा से इसको यहाँ पे प्लग इन कर सकते हैं सो दैट यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ IDP। And at saturation point, if you have to find the saturation point would be at VSDP minus VTP. That was in NMOS it was like VGS n minus VTN. So ये same point है जो हम saturation के लिए use कर सकते हैं for our pMOS. And then if we have our saturation voltage like obviously our input voltage VSDP that is less than threshold voltage, if we are talking about this region, this non-saturation region, then we will have a formula for current that is given by IDP is equal to beta P divided by 2, and obviously in bracket 2 VSDP minus VTP, and then we have VSDP multiplied by this expression and subtracting VSDP square. So हमने ये equation देखी थी for our NMOS, we have only substituted the values for like this pMOS MOSFET. And after this like electrical properties, if we have to observe our sizing for our pMOS, there is not much of a difference in sizing that we have studied earlier. So we can say that the mobilities of n-type and p-type differ. Obviously that is a real case कि हमारे पास mobilities of जो electrons हैं और mobilities of जो holes हैं वो दोनों differ करती हैं. So we have typical values of like mobility of holes that is equal to 220 centimeter square and per volt second, and then we have mobility of electrons that is 550. So if we have to solve this ratio, अगर हम ये ratio find करें इन दोनों की, so that would be like mu n divided by mu p, which is equal to approximately that varies from 2 to 3 this expression, this ratio. Or because like we get this value greater than 1 because like in real cases we have mu n is greater than mu p, and it is always the case. And और हम ये कह सकते हैं कि बीटा n is equal to kn, that is obviously multiplied by w by l, and then obviously beta p is equal to k bar p w by l and p. So widths need to be adjusted कि अगर हमने इसकी sizing करनी हो तो हम इसकी like widths को adjust कर सकते हैं so that we can achieve our required betas. यहाँ पे जो एक और बात ऑब्जर्व करने वाली है कि whenever we would use n with beta, that means that is linked with the NMOS, and similarly w by l and n, it means we are talking about NMOS width and length. So if we have to find the pMOS characteristics like the drain and source resistance, we can find Rp with this formula, that is 1 over beta p VDD minus VTP, and we can observe from here like Rp is inversely proportional to beta n, and that beta n is linked with the Kp, that is W by L. So obviously the larger aspect ratios give smaller resistances. Whenever हमने ये increase करेंगे तो हमारे पास जो RP होगी basically वो small हो जाएगी. Like इसके increase करने से हमारे पास बीटा n जो है वो large होगा. जब बीटा n large होगा तो हमारे पास RP जो है वो small हो जाएगी. And similarly we can say that gate capacitances will be given by CGP, which is equal to C oxide WLP. And C oxide is same for NMOS and pMOS, like we can use same value for both our MOSFETs. And we have CGSP, which is equal to CGDP, and which is equal to 1 over CGP. यहाँ पे हमने वही ऑब्जर्वेशन यूज की है कि जब हमने ये कहा था कि हमारे पास जो गेट है उसको हम लोग हाफ में डिवाइड करते हैं. द गेट कैपेसिटेंस इज डिवाइडेड इन हाफ.
one half is for like source and one half is for like our drain. And similarly, the junction capacitances can be found from the same formula which we have derivated for, like which we derivate for our NMOS. Like we have Cj A bottom plus Cj SW and P. And if we have to observe these values, these quantities here, the parameter is like W plus X, which is equal to, like, this W is the width of our channel and X is basically the width of our P plus region. And similarly, Cj is given by is given by epsilon Si divided by Td, and the sidewall capacitance is given by epsilon Si divided by Td and multiplied by the thickness of our diffusion region. And these Cj and CjSW values differ than NMOS. Obviously, that is a factor that depends on doping. So जिसकी वजह से हमारे पास ये दोनों जो factors हैं, ये NMOS और pMOS में same नहीं होते, वो vary करते हैं. So this was a quick review of like what link we have with pMOS and NMOS characteristics. हमने NMOS की characteristics पहले स्टडी की थी, उसको अभी आज के वीडियो सेशन में हमने उसको लिंक किया है with the pMOS characteristics. So हम लोग ज़्यादा डिटेल में इसलिए नहीं गए कि हमने NMOS को बड़ी डिटेल में स्टडी किया है, उसके लिए हमारे पास काफ़ी सारी वीडियोस जो हैं वो अवेलेबल हैं. So that's it for this session. I will see you in next session.